तो मुझे बताओ बड़ा एमसीक्यू है, सब लोग समझने की ट्राई करो. द एवरेज of a series of overlapping averages, each of which is based on the certain number of items within a series is known as your options are A moving average, B weighted average, C simple average, D none of this would. Anyone who can try this? चलो कोई बात नहीं बड़े, ये एमसीक्यू उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर बड़ा नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं. नो पार्ट इट इज रॉन्ग बड़ा, इट इज अ मूविंग एवरेज. दिस मूविंग एवरेज. चलो बड़ा नेक्स्ट सम फटाफट में फटाफट. इफ द variance of is the variance of variance of five, 7, 9, 11 is 4, then the coefficient of variation is 1. And the coefficient of variation is 1. Your options are A 15, B 25, C 17, D 19. थोड़ा गिवन डेटा इज अ रॉ डेटा, वराइंस दिया हुआ है तो बड़ा आराम से स्टैंडर्ड डिविएशन तो मिल ही जाएगा. एंड फॉर दिस गिवन डेटा आराम से उसका मीन भी तुम्हें मिल जाएगा. मीन you can easily find the coefficient of variation by using the formula as standard deviation upon mean into 100.
चलो नेक्स्ट। करेक्ट, द आंसर इज 25। नेक्स्ट सम में होगा। नेक्स्ट सम थोड़ा, नेक्स्ट सम। Next sum, and the last sum of this chapter. If the total frequencies of the three series are T, 60, and 90, and their means are 12, 15, and 20 respectively. 12, 15, and 20 respectively. The composite series is, and the mean of their composite series is. Composite means which is made up of. Your options are A, 16, B, 15.5, C, 16.5, D, 14.5। चलो कोई बता सकता है बेटा कि द गिवन सम इज बेस्ड अपॉन बेटा? गिवन सम इज बेस्ड अपॉन। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Right, बेटा, very good. Only one student has answered बेटा. The sum is based upon the combined mean। चलो फटाफट स्टार्ट करो सम सॉल्व करना। combined mean। Priyanshu, how many groups are there?
तो 3 ग्रुप्स है तो फॉर्मूला यूज करो बड़ा सब लोग x बार टू द बेस 1 2 3 which is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar upon n1 plus n2 plus n3